Hello everyone, welcome to Grow Med. My name is Dr. Padmini and I have done my MBBS from Mari State University, Russia. And the Jan 2024 FMG attempt, it was my first attempt and I have cleared the exam in my very first attempt. So in this video, I am going to share with you guys the most important part of the study, that is the revision, and yet it is the most difficult part of your study because revisions करना बहुत मुश्किल है, because most of them, they do not like the revisions, the process of this revision, but the revision is the key to success. So it is the key to clear most of the exams, not only the FMGE, it is the NEET PG, the I9 CET, any exam you go, the key to the success is the revision. So revision is a very important part. So I am gonna share with you guys now few techniques and few tips by which you can make your revisions effective and enjoyable. So the methods which I'm going to share with you guys now, even I have tried them and they have helped me a lot. So you also try all those techniques and look at the changes by yourself, how much it will be helping you guys. So the first important thing for making revision very easy and funful is to make your own handwritten notes. So I believe that these handwritten notes, they play a very important role in your revision because you will be writing it with your hand, okay, so with your own hand, and you will be making it like short notes, okay. So while the first time reading, you will be reading the whole notes, whichever notes you might be referring, those whole notes, and they are so much lengthy, like approximately 200-300 pages of one subject. So if you count like this, then it will be like thousands of pages which you need to read, and you will be bored while reading it, doing the revisions. So what you need to do is, when you are reading the concepts, right, like for example, you have read about let's take an example like the antepartum hemorrhage, okay, so you have read about the antepartum hemorrhage, you have also understood the concepts, and you have referred the notes which you have, okay. So from that notes, they are like, it will be approximately 4-5 pages, right, including the images and the MCQs, everything. But what you need to do is, when you're reading it, take a pen and a paper, take another different book, and start writing the points in a short, like for example, what do you mean by the antepartum hemorrhage, so definition लिख लेना, उसमें antepartum hemorrhage करके definition लिख लेना, ठीक है. तो फ्लो चार्ट टाइप का बनाना, images अपने stick कर लेना उसमें, ठीक है. अगर if you're using the iPad or any digital notes if you're making, then you can stick the images as well, ठीक है. फिर स्टिकी नोट्स स्टिक कर लेना उस पर, जैसे कोई निमोनिक है, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो make a mnemonic and add the sticky note, and then try to make some colorful highlight करना points को, ठीक है. तो ऐसे में you can make your notes short and also colorful, ताकि वो तुमको read करने में आसानी हो, ठीक है. तो whenever next time you will be wanting to do the revision, you will not be bored because you will be having that all the content in fitted in a 15 to 20 pages, ठीक है. So 20 to 15 pages you'll be easily reading it. But अगर revision के time पे you will be taking and sitting the whole book, then 200 to 300 pages, then it becomes hectic and most of them do this mistake. So revision के लिए mainly अपने hand notes बनाना, ठीक है. So it might be a little bit time consuming in the first time, but जब आप revision करोगे ना, it will be time saving for you guys, because next time पे you can revise the whole thing in one day, right. तो जैसे ऑब्स गायनिक के आपने 50 या 60 पेजेस में कर लिया, तो you can revise the whole thing in a one day or most probably 2 days, ठीक है. तो ये शॉर्ट नोट्स का प्लीज़ ट्राई करके देखना गाइस, it will help you a lot. Okay, so I was saying about the example of the antepartum hemorrhage, right. So antepartum hemorrhage का एक पेज में take one page and flow chart type का बनाना. There are usually 3 types, right, the placenta previa, the abruption, and then the vasa previa, okay. So write all these things in one paper, flow chart type का ऐसे बना के, ठीक है. फिर एक तरफ placenta previa का, एक तरफ vasa previa का, सब कुछ like the clinical features, write it in a short, की एक बॉक्स बना लिया clinical features short में, right. पेनलेस ब्लीडिंग, फिर यूट्रस टेंडर होता है, फिर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होता है, ऐसे करके, ठीक है.
तो इफ़ यू राइट इट दिस वे देन वेन एवर क्लिनिकल केस इज आस्क्ड राइट, तो यू विल बी गेटिंग कि अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो यू कैन कोरिलेट दोज पॉइंट्स इन द क्लिनिकल केस एंड यू कैन यूज ईजिली सॉल्व द MCQs ऑल्सो। तो नोट्स का तो हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर यू विल बी डूइंग द शॉर्ट नोट्स बाय योरसेल्फ, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द डूडलिंग मेथड, ठीक है। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी, वेन एवर आई यूज टू डू द रिविजन, आई यूज टू टेक अ stick note or a paper, rough paper and a pen and start scribbling whenever I used to read. Like for example, obstetrics का ही देख लेते हैं. When I was reading the antepartum hemorrhage, like I used to make a flow chart, the 3 types. Then clinical features I used to write it. ठीक है, not perfectly but just on scribbling. ठीक है, तो whenever you'll be scribbling, your hand will be in the वर्किंग, योर हैंड ऑल्सो विल बी वर्किंग एंड योर ब्रेन ऑल्सो विल बी वर्किंग, ठीक है। तो ये डबल वर्क हो जाता है, योर आईज आर वर्किंग, योर हैंड इज वर्किंग, योर ब्रेन इज वर्किंग डबल, ठीक है। और तुम एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज एंड स्टार्ट रीडिंग लाउड एंड राइटिंग टुगेदर एंड ऑल्सो सीइंग इट, ठीक है। तो दिस मेक्स योर सेंसेस, मतलब आपके बहुत सारे सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो माउथ भी, ईयर भी, आइज भी, फिर हैंड भी, ठीक है। तो इट विल इफेक्टिवली, मतलब एक चीज़ तुम चार बार अलग अलग तरीके से एक ही बार में पढ़ रहे हो, है ना। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. By doing that, you will also not be feeling sleepy, because most of us while doing the revisions we feel sleepy, क्योंकि बुक सामने रख दो and just keep on reading it, right? एक तो दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा and more than that you will feel sleepy, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करना ये स्क्रिबलिंग वाला मेथड भी. Then moving on to another very important technique, that is reading out loud, ठीक है। So whenever you are doing your revision, take the short notes and ऐसे एक्ट करना जैसे यू आर टीचिंग समवन, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड रीड इट लाउड एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट कि आपने नोट्स ले लिया एंड यू आर वॉकिंग अराउंड समवेयर इन योर होम, इन योर टेरेस और समवेयर, ठीक है। तो वॉक करते करते यू आर रीडिंग इट, बिकॉज वॉक करते करते रीडिंग में भी यू विल नॉट फील स्लीपी, सो चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। एंड देन इफ़ यू सिट इन वन प्लेस ऑल्सो ट्राई टू मेक इट लाइक reading out loud, ठीक है, like teaching it to someone. Then like this you will be easily able to remember the things and you will easily recall it, ठीक है। तो whenever you are solving the MCQs, so you will be able to recall it कि अच्छा हाँ मैंने तो ये read loudly read करा हुआ था, ठीक है। तो and when you read loud, तो your mouth also will be working, your ears also will be working, ठीक है। तो ears will listen to it and mouth will read it. तो like this you can also make your revision effective by this method, the reading out loud method, ठीक है। Then another very important thing is the sticky notes. So sticky notes, what you can do is the things which you are not able to remember, or like for example there are some topics, right, which you will not be able to remember it at once, or there are some things like which you will be forgetting it all the time, jitna bhi pad lo you will forget it. So in that way you can make sticky notes and stick it to your study table, on your study table or on your notes. So whenever you look at the study sticky note, you will be able to recall, ठीक है। तो वो recall हो जाएगा and ऐसे में you will remember the things also. And then the next important is mnemonics. So mnemonics basically they help you guys in remembering the things, like कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो you will not be able to read it, right, मतलब कोई सीक्वेंस है या फिर कुछ बहुत सारे नेम्स है तो वो याद नहीं होती है एक साथ, तो mnemonics also can help it in a way. तो mnemonics से भी आप याद कर सकते हो. Okay, so the next and another important thing is taking the power naps, ठीक है। तो power naps मतलब कि ऐसा नहीं कि सो जाना है 2-3 घंटे। तो power nap means अभी आपने 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो whenever you feel sleepy, right, आपके स्टडी टेबल पे ही make a head down and टेक अ पावर नैप फॉर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि यू विल फील फ्रेश एंड आपके दिमाग में भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है कि अच्छा फिर से वो रिस्टार्ट अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो फिर से यू कैन गो इन टू दैट पाथ ऑफ द स्टडिंग फॉर अगेन 2 or 3 आवर्स। तो कंटिन्यू बैठ के पढ़ना फॉर 5-6 आवर्स, इट इज़ हार्ड, राइट। तो पावर नैप्स यू कैन टेक लाइक फॉर 5 मिनट्स देन 10 मिनट्स, ठीक है। So these were some important techniques for the revision which you all guys can follow, ठीक है।
So now I will share another very important thing which you must follow, and that is the morning revisions. Okay, it means that you will be revising in the morning what you have read in the previous day. So every morning when you get up, keep 1 hour for revising what you had read in the previous day. Revising से मेरा मतलब है कि you will be doing it a fast reading. Once go through all your notes whatever you have read, ठीक है. So this is very helpful and helps in a lot of way. एक तो रिदम बना रहता है, ठीक है. लाइक यू हैव रेड दिस येस्टरडे, सो यू विल बी प्रिपेयर्ड कि मेरे को आज सुबह से मतलब द रिदम विल बी फॉलोड. ओके, एंड देन द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दो मतलब तुरंत ही रिविजन हो जाता है. यू विल ब्रश अप योर मेमोरी एंड इट इज़ अ गुड वे ऑफ रिकॉल ऑल्सो. एंड you will also come to know which point you have forgotten from the yesterday's part, ठीक है. So the part you have forgotten, just mark it and read it twice so that you will not be forgetting it again, ठीक है. So like this you can do the morning revisions also. And morning revisions, trust me guys, these are the most effective thing, and even I have followed it, and this method only helped me a lot. So that's it in this video guys. We have discussed about some important techniques which you can follow to make your revisions effective. So follow करना वो सारे steps और बताना कि how effective it was in your preparation. So good luck for your FMG journey. Like the video, share it with your friends and subscribe to GrowMed. So this channel is a one-stop guide for the FMG aspirants, and we will be discussing the mnemonics, the previous year questions, then important topics, image-based questions, everything. All you need for the FMG is, so do subscribe to GrowMed and tap the bell icon. So thank you so much for watching this video guys. I hope you will find this video useful and it will help you guys in your preparation. Thank you so much. Bye bye.